can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to. No one understands, this shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Unknown Brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain and rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind and see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking ass if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. So faceless. I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Love. We're running in the jungle of love. Listen to my conditions, I got you on my mind. You were stuck in my head and I don't know why. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Love.
I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you. You keep drawing me in, and I know it's a sin. But even so, yeah, I need you. You taste like candy. Eat you on a Sunday. Feels so bittersweet, knowing I can leave. You taste like candy. Eat you on a Sunday. I can feel the beat on my holidays. 'Cause you taste like candy. Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Well, welcome, ladies and gentlemen, to South Asia Qualifiers CSGO Male Division, and currently we have a very great matching going against between Team India and Team Bangladesh. And currently, it's the first match for today. We have one more best of one lined up, and looks like the game is going very good for Team India. And with me joining on the custom desk is going to be Tarun. How do you feel, Tarun? Well, feels already great. Team India looking to be on a big lead. But this round 22 specifically seems to be at Bangladesh might get a crucial edge. And yes, they do as Blink finds Well, two to get the I 8 point for guess the side the of game Bangladesh. is And the T back. side looks as great as And ever for them as putting up they the really score managed to line. get Looks like themselves Team the India 8 point. has There's still a round before 6 rounds, so I'd love to see how these round. 6 rounds are going to pan out. But Team I India mean, just one more round round. away They from had getting the map point. one round. Yep. Mm-hmm. Yeah, one round away from getting the match point, and eventually they'll be winning this best of one series. I mean, usually we expect a best of three, but it's too hard to judge an entire team based on a best of one. But I think it's fight for the fittest, and the survival is gonna definitely beat out Bangladesh currently at a very good momentum as they have a full buy round, and Team India on an eco, barely any weapons left in their hand, just a P250 and USP. Well, I think pistols are enough to make miracles, but with an AWP in the hands of Faith from Bangladesh, I think that's going to change quite some calculations over here. But most importantly, I want to focus on the fact that India. Well, two picks for the side of Blank, and once again,
It's Team Bangladesh getting themselves the 9.9 total points for them. And now we'll love to see how Team India is going to come out Yep. with the bye. ये एक पहला bye रहने वाला है उनके लिए after these three Yeah. previous rounds. And this is going to be one of the rounds which really matters the most. They haven't yet bought the op yet. So what are your thoughts on this, Tanvi? Mhm. I mean, they just had an eco round in the last one, and they pretty much lost that against Bangladesh as well. So losing 3 rounds back to back, it is definitely showing an impact on their economy. And I don't think they have any funds enough to get an op in their hands right now. So all the focus is about getting that match point, and Nikkei is definitely making that happen. A beautiful double kill, a triple kill coming Oh, from him, and Spawn God closing it out on the last 2 kills, 15 rounds, and the match point for Team India. Just one more round. That's it. And we have our next match coming up against Team Sri Lanka. I mean, perfectly executed. B side pe, like जाने की पूरी हुई थी, but somewhere down the line, Team India managed to entirely lock them down inside the monster and what area. अब तक connector control भी लेने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है Team Yeah. Bangladesh. We'll have to see how they are eventually going to come out, but now they go on for an early party control where LSK, wow, finds one, fire up, gets another one. Wow. There's only 3 players left, and Team India 3 kills away from getting themselves the victory in this match one. Yes, definitely. I mean, you asked me why they didn't pick it up. Clearly looks like they've got their funds back and they have an AWP in their hand. That too in the hands of Fired Up now. He's one of the aggressive players already going in for a double kill over there and a Oh. triple and no quad kill, closing it up for Team India and winning against Team Bangladesh. I think I should definitely say that this last round was definitely a worthy end coming in for Team India against Team Bangladesh. Well played, I should say. I mean, they gave a tough fight. 216 to 9 is not a bad score, but Team India walking through the green carpet currently. Exactly. How well could you have even have mentioned it? They're just going to be walking through the victory. First match is going to be done and dusted, and that's going to bring up the first victory indeed. But that's not it, ladies and gentlemen. We have another game for today, which is going to be up against Sri Lanka. Now, Sri Lanka, one of those promising teams out of all the 5 teams we have in the South Asia, and in this South Asian qualifiers, only 2 teams will make it to the World Finals. I'm going to be incredibly excited. What about you, Elika? Because second match is indeed something which, if Team India wins, they might only be 1 win away from getting themselves in the World Finals. Yes, and I'm of course pretty much excited, not just on the male division, but even on the female division. I think Team Sri Lanka has quite good players, and I'm really expecting that Team Sri Lanka will put down their efforts. And Team India, of course, they're currently at the best form that they have. And these players have not just, it's not their first, I think regional qualifiers they've played previously as well in the last year and the year before that. So I think the victory just keeps following them, but the fact that they have to maintain that consistency even in the world finals. Now, currently, South Asia has 2 slots for Asia Yeah. regionals, and that will be held in Riyadh from 10th July. And the Asia qualifiers will be held along with Gamers 8 as well. Yep. And honestly, if you ask my opinion, I think Sri Lanka team is also a team with a lot of surprises and suspense coming in through. So in order to wait for that match, me and Afcon will take a short break, and we'll meet you right back here with the next match. Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In
2023, international esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, international esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, international esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, international esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, international esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, international esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion?
got what it takes. The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Think you've got what it takes. The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home.
Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion? Do you think you've got what it takes? The challenge will be tougher than ever. In 2023, International Esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. Who will rise up to the challenge? Who will be the world champion?
Welcome, ladies and gentlemen, once again to the South Asia क्वालिफायर्स, जहां पे 5 बेहतरीन देश आपको यहाँ पे CSGO के मैचअप पे compete करते हुए देखने को मिल रही है। पहला मैच ऑलरेडी टीम इंडिया बांग्लादेश से 1-0 के एक अच्छे लीड के साथ जीत चुकी है इन 16-9 स्कोर लाइन। बट अब हम बढ़ने वाले हमारे दूसरे मैचअप की तरफ। This time it's India going up against Sri Lanka, but with us here in the caster desk as well, we have none other than Elika. So Elika, how are you feeling about this game? I'm feeling really great. Actually, I'm very hyped up because, as I told before the break as well, that Sri Lanka has one of the very good players, but they do give out a lot of surprises. So I want to see if they have something in store True. for us today, or Team India is going in for a clean sweep. But currently, the confidence coming in from Team India is too good. The way, the momentum, the way they are building up their communication is just too good for them to lose this match. So the match against Bangladesh was not a pretty one because it looked mostly one-sided for Team India. 16-9, again, huge score difference. Before they could even reach double digit, Team India shut them down, and True. I'm Yeah. hopefully expecting the same from Team India against Sri Lanka. And I think one more thing which is going to be really interesting to talk about is indeed going to be that this is going to So be the how are South you Asian feeling about qualifiers. the match though? And I mean, I'm really feeling great. Like Tanvi, the first matchup going up 16-9. I think Team India, they have a very big chance because South Asia से 2 slots आपको Asia region के तरफ देखने को मिलने वाली है, which will be held in Riyadh. So, 10th July is going to be, where all the Indians are going to be keeping the eye on for, especially to all the 5 players जो कि आपको Indian team में देखने को मिल रहे हैं. Fired up, none other than Spawn. Then we have SK Wow, Clouda, Nikes and SK Wow both popped in really great. Like, these are some of the players who are really some of the finest in the region. And them forming the synergy, playing and having experience in so many years. All of those years really bringing out together. But this time now their matchup is going to be up against Sri Lanka. Not one which you want to take it that easily, but I'd love to see how things are going to really pan out. क्योंकि ये मैचअप जीतना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज के दिन टीम इंडिया के 2 मैचेस है लेकिन कल के दिन भी हमें उनके 2 मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। टू ऑल द व्यूअर्स, डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टुमारो because tomorrow it's going to be India going up against team like Nepal and then Pakistan as well. So like tomorrow is the day. आज से सिर्फ हमारे वार्म अप्स हमें देखने को मिल जाएंगे प्लेयर्स के भी और हमारे भी, बट कल के दिन जो एक ट्रीट रहेगी इन सारी like टीमों को देखने के लिए, it's going to be something which is going to be really excited for. Yeah, definitely. I definitely do agree. But so far, I think India had a really great start in the qualifiers, open in the regional qualifiers. 1-0, of course, they won against one country. They have three more countries to fight against. And again, I won't say that it's going to be an easy walk. No matter how good these players are, maintaining that throughout the series is what makes them different and what is going to help them eventually into the South Asian slot, that we have 2 slots. And I really hope India does make it, and of course one more country. But there is only one potential team that I feel has a really good chance to beat Team India, and that is Team Pakistan. They have been so hungry, and trust me, they are genuinely True. good at the game they play, CSGO, and the players are just too good. So it's either going to be Team Pakistan, that's going to be the biggest enemy that Team India has to fight against, or else Team Sri Lanka and Nepal can point me wrong, can definitely turn my statement against me. It completely depends on how confident these players are. But again, Team India, all the very best for them. Not just CS:GO male division, we also have CS:GO female division coming up. I think it's Oh going to yeah. start from 11th May, and I'm pretty much excited for that as well. And if you guys want to stay updated, do subscribe to ESFI's YouTube and follow us on our Instagram for all the updates. And if you have any feedback for us, my DMs and Upcone's DMs are definitely open. मुझे तो हिंदी इतना ज़्यादा आता नहीं है, जी. but I can definitely speak Hindi. Yeah. True. Little. I think like this is indeed going to be something interesting, and I'm with you, Elika, on that. Like Team India definitely have a best chance, but हम यहाँ पे 2 slots की बात कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे जो हमारी 5 देश है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, उस पे अभी फिलहाल द टीम इंडिया they have a victory. Being out of 5, you at least need 3 wins. Means आज अगर like एक मैच आप जीत भी गए
तो भी दूसरा मैच जीतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो सेकंड डे पे एक बहुत अच्छा एडवांटेज, एक बहुत अच्छा आपके लिए प्रेशर रिलीज करता है. If they lose up against Sri Lanka, so you know it's a must win for Team India. Plus, the margin from which the teams are going to win is also something which is really going to matter. क्या Yeah. यहाँ पे वो जो margin है, is it going to be a clean sweep? Is it going to be just the way we saw in the previous matchup, which Mm. was against Bangladesh at 16-9? Because ऐसे score lines, I think, really shows up कि दोनों ही टीमें कितनी equally skill grouped है. And talking about Bangladesh, their firepower looked really on point. And when it comes down to Sri Lanka, I'm expecting something like that. India, when it comes down to strategy, CSGO is one of the tactical 5v5 shooter games. And ye 5v5 tactical shooter games play, your firepower is just one of the 10 factors which you need, including the use of your util, including that, timing, which really you sometimes tend to get, and also your stream synergy. Team synergy, जिस तरीके से टीम इंडिया ने अपने ट्रेड गेम्स दिखाए, every time any player gets taken down, there is a trade which has to happen. And it really boils down, Elika, I think, to the map as well. I mean, कौन से मैप पे ये गेम खेला जाएगा, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि पहला मैच तो देखिए ओवरपास पे था. Now overpass being one of those very amazing t-sided map. Now when it comes to map like Ancient, when it comes to map like Anubis, these are some of the map which could be really tricky at times, and it could really give a very crucial edge, because we never know which team has the best in their pocket, because this is the only place where we get to see all of these teams compete up against. Iske pehle there haven't any been, like any teams who have been competed, or any where we have seen, these international teams come up together in one server and compete for these championship titles. And I think that's where, IESF plays a huge role by bringing such esports tournaments into the country, and of course, spreading across and giving everyone a chance to showcase their talent on platforms like this. Thank you so much. And of course, I'm glad to be here on the Costa Desk with you as well. But talking about matches, yeah, I completely agree with you on terms of maps like Ancient, Anubis could be quite tricky. Even for that fact, I think maps like Vertigo and, maps that have been played very less like train can also get very tricky. The only obvious maps I've seen so far, at least, teams like Sri Lanka and teams like Team India pick constantly Mirage, Inferno, and too sad that D2 is currently not very active maps. And these two maps, I think, hold a very, important space for CSGO competitive scenes since the very beginning. Inferno, the amount of changes that Inferno and Mirage have gone through, it's like I think the map has been the existing forever. Inferno. I've it's giving me flashbacks of back then CS:GO majors, how different it was. But I really am glad it's 2023. 10 years later, it's been more than 10 years that CS:GO has Yeah. come out, and it's still going up in the country. This explains how much gaming puts into dedication of players, and how one game can go up to more than 10 years. We've of course had so many other competitor games come through, but yeah, I'm really glad that CS:GO is still very active, and the players, the amount of time they are putting in the game. Team India, I've seen the same players in the last 3 years competing for this title, and I'm so glad they qualified to Team India this year. Also, just for fact, I'll just tell you whoever is in the team for Team India currently. We've got SK Wow, a very talented, player once again, and an opera as well. We Yeah. have Fired Up, of course, playing from a long time. Spawn, Jaspreet Singh, he's been existing in CSGO community forever. Nikes, I think we just saw Nikes, get a triple kill in the last game itself. Last but not least, we have Clouda and Omkar. Omkar is currently the sixth player, I believe. And Fired Up, what an op, dude! That last round, Yeah. 4K, and he finished the last round and the winning moment for Team India against Bangladesh. That was definitely something to appreciate on Fire Up. Exactly. And yeah, I'd love to see how the match entirely goes on. But somewhere down the line, deep down, I do believe Team Sri And Lanka as honestly, well. I want to know, Upcon, what was your first encounter with CS:GO? How did you start CS:GO? How did you meet CS:GO?
I mean, CS:GO been one of the most OG games, isn't it? I mean, back like आप बात कर रहे थे कि 10 years almost, it's been a decade for CS:GO. Like when it comes down to a classical 5 tactical shooter, this is one of the OG games. Gamers have started to unite with each other because of multiplayer games, and when it comes to multiplayer games, what's better than CS:GO itself? Bringing all the players together around the world, and it's not just the players today, it's also the audience, which are just brought back from the entire South Asia for this qualifier. All thanks to ESF, and all thanks to all of the like partners who came together to make sure that ये एक अपॉर्चुनिटी बन पाए उन सारे खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने इतने साल तक अपने द्वारा इतने डेडिकेशन, इतनी लाइक एक हार्ड वर्क और अपना टाइम पुट इन किया है इस गेम पे, just to prove themselves what their true caliber is, and that is what is really going to be on the line at this point. यहाँ से there's no turning back. It doesn't matter कि यहाँ तक पहुंचने में आपको कितनी मेहनत लगी, यहाँ से अब वो किस तरीके का अपना परफॉर्मेंस रखेंगे वो डिसाइड करेगा that will they end up in the top 2 position, but they will get a chance to go in Riyadh and compete in the Asian qualifiers, because अभी South Asia qualifiers है. South Asia में we have 5 teams. आफ्टर दैट 2 teams are going to progress in एशिया क्वालिफायर्स. बहुत ही बड़ा एक मंच रहने वाला है, एंड टीम इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि दैट रियली ओपन्स अप योर ऑप्शंस to go for the 15th World Esports Championship. And this is going to be indeed huge, because as far as I've heard about it, Lika, I think it's a massive prize pool of $5 lakh, like $500,000 is what is going to be on the line at this point when they make it to the Esports Championship. But still, the route is going to be really, really far away, and I'd love to see how things are really going to come out. But for now, map V2 जरूर हो रहा है यहाँ पे, guys. So do let me know what are your predictions for it. Because we have seen Team India in the map of Mirage being really great, bringing that double op setup. Overpass को हमने अभी just witness किया Team India से. On top of that, if we talk about the other maps which is going to be on the pool, it's not going to be Dust 2, unfortunately, because वो replace हो चुका है अब Anubis से. We have Ancient which will be bringing in. Vertigo एक map हो सकता है, but I'm sure कि उस मैप पे जितना हो सके हमने आज तक टीम इंडिया को like we have seen only once out of 9 games whichever they have played. So what are going to be your thoughts on these map pick? Because eventually Dust 2 को जब replace किया गया Anubis द्वारा, which is completely a big like I'll say a 12-3 type of T-sided map, कि अगर आपने 12-3 भी कर लिया, you are good to come in with the second half comeback. Even we have Inferno. So what are going to be your thoughts when it comes down to the map video की टीम इंडिया को ये सारे मैप शायद कंसिडर करना चाहिए, and maybe they would not want to compete up against Sri Lanka and those other maps as well? Well, I mean, I am pretty much expecting Team India to go for a default pick to one of these very common maps. As I told you, Team India is someone who wants to give their best, who wants to, play smart rather than like, taking experiments or you're taking bold moves. I think एग्जैक्टली, बट चलिए नाइस राउंड यहाँ पे समाप्त हुआ. मिराज के मैप की हम बात कर रहे थे, लेकिन लुक वे वी आर राइट नाउ. इट्स गोना बी द मैप ऑफ मिराज, जहाँ पे टीम इंडिया टी साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है चूज करते हुए. नाउ दिस इज गोना बी इंडीड इनक्रेडिबल, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू मिराज, आई लव टू सी हाउ दोस डबल ऑप सेटअप इवेंचुअली पैन्स आउट. But at this point, it seems to be a clean rush B call coming in from the IGL themselves. And ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अगर बी साइड पे रश करना चाहे तो 3 खिलाड़ी टीम श्रीलंका से फिलहाल होल्ड करते हुए देखने को मिल जाते हैं आपको. यहाँ पे रोशी, बेंजी, हाइपर कोच एंड जिपा इज जस्ट होल्डिंग डाउन. फ्लैश कम्स थ्रू, 2 प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी अग्रेसिव हो रही है. एक प्लेयर बेंच की तरफ हाइडेड जरूर है, बट क्लाउडा फाइंड्स टू बेंजी टू गुड इनफ फॉर 1, बट 1 प्लेयर स्टिल पोजीशन टुवर्ड्स द शॉट एरिया. कुछ यहाँ पे अपने द्वारा एक और एक किल निकाल जाएंगे. टीम इंडिया डाउन टू ओनली 3 प्लेयर्स, बट द प्ले ऑन द बेंच इज गोना बी डेल्ट ऑफ. इट्स ऑल फॉल्स डाउन टू हाइपर इन अ 1 वर्सेस 2. इज गुड फॉर 1 दो. 2 खिलाड़ी और यहाँ पे जरूर रिमेनिंग है. 1v2 पे हाइपर रिमेनिंग रियली आइस कोल्ड, बट यहाँ पे गलत एंगल को चेकआउट कर रहे थे, एंड स्पॉन गॉड कम्स अप विद द फाइनल किल.
दैट्स गोना बी द पिस्टल फॉर टीम इंडिया. बहुत बेहतरीन शुरुआत, और इस शुरुआत के बाद लेट्स सी हाउ थिंग्स आर रियली गोना पैन आउट, बिकॉज इतने ज्यादा अग्रेशन के रहते टीम श्रीलंका. दे एंटिसिपेटेड इंडिया सो वेल. सारे के सारे खिलाड़ी ऑलमोस्ट अपने रोटेशन में बहुत वेल टाइम थे, बट अब यहाँ पे डीगल्स पे अपग्रेड किया है. टीम श्रीलंका को पता है कि ये राउंड हारना मतलब 2400 मिलेंगे, बट उसके बावजूद रोचेस मैनेजेस टू गेट एन हेडशॉट ऑनटू एसके वाओ. दैट्स अ स्मोक थ्रू द स्पैम्स, एंड दैट्स गोना बी टीम इंडिया डाउन टू ओनली 4 प्लेयर्स. लेट्स सी हाउ इट्स गोना पैन आउट, क्योंकि यूटिल गेम में अभी भी टीम इंडिया के पास बहुत अच्छे यूटिलिटी बचे हैं. एंड द फैक्ट कि किल जरूर टीम श्रीलंका को मिला, अब तक उन्होंने कोई भी गन्स रिट्रीव नहीं किया, बिकॉज टॉप मिड पे यहाँ पे एसके वाओ को डाउन किया गया था. देखते हैं कि ये डीगल्स क्या अपना कमाल कर पाते. फिलहाल जिपा कैटवॉक पे बहुत क्लोज एंगल पे होल्ड कर रहे हैं. आई थिंक लैडर रूम कंट्रोल क्लाउड ऑलरेडी ले चुके हैं. दिस ओपन्स अप सो मच अपॉर्चुनिटी, बट एमेट में फायर्ड अप को डाउन किया गया. दिस गिव्स वन मोर चांस फॉर द साइड ऑफ टीम श्रीलंका, as numbers advantage looks good for them, but Nikkei's getting down towards the side of, like a sandwich position is really going to put them in a very bad spot. Roaches get spotted behind the side. Nikkei's is going to come in to do some damage. The molly is going to just push him apart, but Roaches doesn't manages to find any coach. Meanwhile, यहाँ पे निकेश को डाउन करेंगे. It all comes down to Spawn God. 1 versus 2. The bomb has to go down. Let's see कि क्या यहाँ पे कुछ कमाल कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब तक बॉम्ब डाउन हुआ नहीं है. मार्केट पे पुश करके Spawn God gets the headshot. But here's where the real game begins. Hyper तो यहाँ पे पीछे से एक गन रिट्रीव करके आ रहे हैं. And the bomb is going to be planted for apps. And there's no anticipation from Spawn God. It's a 1v1. But Hyper एक बार के लिए जानते हैं कि ये टाइमिंग उनके नाम हो सकती है. And they win an anti-eco against Team India. Team Sri Lanka. What a CT side for them. And that is just incredible. डिफ्यूजल किड है नहीं फिलहाल, बट आई डोंट थिंक कि ये इतना ज्यादा आपके लिए इशू करना चाहिए, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम. एंड दैट वाज सो वेल प्लेड. यू गोटा गिव प्रॉप्स टू टीम श्रीलंका एट दिस पॉइंट, बिकॉज दे गॉट द फर्स्ट ब्लड इन द मिड साइड. व्हाई डू यू नीड द राइफल्स व्हेन डीगल्स आर डूइंग द मैजिक? शॉट पे भी यहाँ पे वो जो किल निकला अगेंस्ट द साइड ऑफ हाइपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज जस्ट इनक्रेडिबल, एंड दैट जस्ट केप्ट द मोमेंटम गोइंग ऑन. टीम श्रीलंका नाउ हैज अ वेरी एफिशिएंट बाय. हाइपर ने अभी तक बाय किया नहीं है, बिकॉज उनके पास एक AK सेफ थी from the previous clutch which he did. But when you talk about Team India, they are going in for these force buy. And ये force buy एक ऐसा force buy है जिसपे अब यहाँ पे थोड़ा अपने द्वारा एंटिसिपेशन करना होगा कि कैसे भी वो अपने स्मोक्स के इंतजार से यहाँ पे पूरी के पूरे साइड कंट्रोल ले पाना. लुक आफ्टर एसके वाओ, ही इज ऑलरेडी गोइंग अप द टेट्रेस एंड हाइपर टेक्स हिम अपार्ट. मीनवाइल हाइमिड के फाइट पे यहाँ पे स्पॉन गॉड इज गोना कम इन. Roches is going to be denied, so that means that the numbers are still equal for both the side. But are the guns? Because guns की बात करें तो यहाँ पे Tech 9s and Mac 10 आपको देखने को मिल जाते हैं. Kuch eventually is going to be, like Kof is just out of the server it seems, which leaves us down to only 3 players. So it's still a 4v3. I think Team India still have a chance when they want to come it towards the side, but mid control has been totally forgiven for श्रीलंका. श्रीलंका आप सिर्फ कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि 3 खिलाड़ी है, आपको ए मेन, बी एप्स एंड मिड कनेक्टर शॉट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. नेस्ट पे अब तक टीम इंडिया बिल्कुल भी बूस्ट करके अपने द्वारा कोई भी एडवांटेज लेते हुए हमें देखने को नहीं मिल रही है. Clouda fired up, moving down from the side of underpass, making their way in towards the apps position. But I think only to find themselves in the crosshairs of Zippa, because Zippa ऑलरेडी इंतजार कर रहे वैंस के साइड पे. इंसेनरी एक आखिरी पीस ऑफ यूटिल जो थी उनकी, वो भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया. दैट विल डिले द सेकंड्स एटलीस्ट फॉर 8. बट उसके बाद वो स्मोक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा. 20 सेकंड रिमेनिंग इन द टाइमर. जिपा इज ऑल डाउन टू हिम. बर्निनी के साथ यहाँ पे हाइपर भी ऑलरेडी आ चुके हैं. जिपा गुड फॉर 1, बट निकेश टेक्स हिम डाउन. 2 more players remaining. 11 seconds left on the clock. Bomb plant होना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. And bomb goes down. It's a true versus 3 retake scenario. One towards bench, one towards shot, and another towards the one position. Bench and hyper on the retake. Let's see अगर ये retake क्या एक possibility बन पाती है. Well, timing के खिलाफ यहाँ पे खेले, and Benji gets punished. Clara finds 2. Team India finds the second one. That's going to be one of those counter rounds. Alternatively, दोनों ही टीमें ये rounds एक-एक करके जीत रही है. पहला round pistols का जो था वो टीम इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से डोमिनेट किया. फिर उसके बाद आपको टीम श्रीलंका एक एंटी इको पे देखने को मिली, एंड देन टीम इंडिया विनिंग इट ऑल विद अ फोर्स बाय. बट वेल, दिस रीप्ले आप देख सकते हो कितना क्लोज हो सकता था वो 2 versus 3 रीटेक, स्पेशली व्हेन यू फाइंडिंग अप अगेंस्ट दीज राइफल.
But Sri Lanka, as you mentioned, Deagles ke saath, they are just another piece of, dominant team which we happen to see. Smoke towards stairs is there. I think CT Smoke का भी यहाँ पे एक execution किया गया Team India, making it look as if it's the A side, but B पे अभी तक कोई rotation call off नहीं किया गया है. This is just gonna be one of those, amazing clean execution rounds. Japa team Sri Lanka still fighting up, but here we come with the first blood. SK Wow gets hyper. Nikes finds Zepa, but Kof with a clean headshot onto fired up. Jungle control and connector पे already push on कर चुके क्लाउड. तो कोफ यहाँ पे अगर एक बार फिर मिड से एग्जीक्यूट करना चाहे तो ये रीटेक थोड़ी मुश्किल लग रही है, बट रोच उसके बावजूद ये डीगल से अपना कमाल कर जाएंगे. Nikes is going to trade him down with a grenade. And there comes the final kill from the side of Cloud. That's going to be the third round. Nikes is looking as good as ever, as even Elika mentioned, and that's gonna be indeed the 3-1 scoreline. 3-1 का scoreline already बन चुका है, and ऐसे ही पेस से अगर टीम इंडिया चलते रही तो I think really they could come up with a good CD side, T side lead. And देखिए, मैं अगर यहाँ पे मिराज के मैप की बात करूँ तो इस वन ऑफ द मैप जहाँ पे टी साइड जरूर बहुत डोमिनेट हो सकते हैं if you have that mid control, because you have those smokes. आप सीटी को बहुत सारे ऑफ एंगल पोजीशन पे पकड़ सकते हैं. एंड ये देखिए, meanwhile बिगर किसी flashes के Nikes goes in, finds two for himself, and that's the side completely open. Now let me remind you that this is going to be indeed one of those semi buy, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार वो डीगल्स के अपग्रेड की वजह से थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बन चुका था, बट अब यहाँ पे जिपा एक बार फिर अपने आप को एक 1 versus 5 परिस्थिति में पाएंगे. Let's see how it goes. Nikes yet to find another kill, and yes, he does. He takes it all for himself. Fourth round is up for Team India. And Team India slowly, steadily सिव और सिव क्लब अप कर रही है. आप अगर रिप्ले में भी एक बार देखो, फर्स्ट किल आया, उन्होंने टिकट पे खिलाड़ी को डाउन किया, फिर स्टेयर्स पे भी एक इंस्टा रिएक्शन एंड टोटल 4 के. I think he almost missed an ace, if I'm not wrong. But that indeed is the round which Team India really had to come, capitalize on. Now coming down to the round number 6, it's going to be Team Sri Lanka. This time with one of their first buy round after the pistol victory. जो एक काउंटर इको उन्होंने जीता था, उसके बाद ये उनका फर्स्ट बाय राउंड रहेगा. एंड ये बाय राउंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने द्वारा एटलीस्ट वो विन अपने लिए निकाल पाए. इवन इफ इट्स अ क्लोज राउंड, आई थिंक टीम इंडिया के पास एक एडवांटेज रहेगा, बिकॉज वो इकोनॉमिकल बैटल में जरूर जीतते हुए देखने को मिलेंगे. एंड सीइंग द प्लेयर्स ऑलरेडी डाउन टू $0, इट्स गोना बी अनफॉर्चुनेट. बट क्लाउडा स्पॉट्स 1 डैमेज जरूर किया गया, कोफ डाउन हो जाते हैं, बट इसी के साथ जिपा क्लाउडा को डाउन करेंगे. बेंच पे बहुत ज्यादा डोमिनेट नजर आ रहे थे, बट oh my god, Nikes, he's finding each and every one of them. Spawn God takes him down. It's down to a 1 versus 1. This is going to be incredibly close, because ये 1v1 scenario में no one has the clue as to where the opponent player is hiding, and Hyper walking up to the markets. This is going to be so close. The timing might really get better of him. धीरे धीरे हाइपर अभी तक जानते हैं कि पोस्ट प्लान परिस्थिति आई नहीं है, बट स्पॉन गॉड इज काउंटिंग ऑन हिज गट्स and just market window se bahar aaya. I think Spawn God knows for a fact, and yes, he peeks through, but Hyper finds the better of him. That's gonna be Team Sri Lanka once again winning the buy round, and this was so much needed for them. मैं बात कर रहा था कि अगर वो 1v1 क्लोज गया, still it's a victory for Team India. Why? Because आप साफ देख सकते हो कि उनके पास इकोनॉमी एक्चुअली में पूरी तरीके से अब मैं कहूंगा कि डाउन हो चुकी है. अब देखिए, एक ही प्लेयर खिलाड़ी जीवित थे. He only managed to retrieve an AK. Then there's the scout, then the USP, maybe a MP7, but out of all of that, we only have a famous. So even after winning the CT round, Team Sri Lanka not at their best buy for now. Let's see where this goes completely, because इवेंचुअली अगर ऐसी बाय चलते रही तो टीम इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा एडवांटेज जरूर बन सकती है, बिकॉज दे वोंट बी फाइटिंग अप अगेंस्ट दोस हेवी आर्मर, दोस हेलमेट, एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स डाउन टू फाइटिंग ऑन दीस फेमस वेपन्स, those headshots aren't going to be enough for you, especially noticing the fact that all the 5 players are looking so good. Underpass को फिलहाल मॉली किया गया, but उसके बावजूद that doesn't stop. And there comes the first kill. Kill is just going incredible. Fired up and Spawn Gods who gets 1 each for themselves. So means the numbers game is still looking strong for Team India. But Sri Lanka 3 खिलाड़ी जीवित है. SG जरूर connect हुई क्लाउड पे. 72 का damage. I mean, that's not a small damage. He dealt a big dent on the HP. Fired up and Cloud up both down to very low pixels. But Roach and Zippa, can you do something? Post plant situation अभी तक आया नहीं है. The bomb is still being held off towards the aim in position, but slowly steadily jungle and nest control लिया गया है Team India द्वारा. तो I think Zippa, he has to win this duel.
फुटस्टेप दिया तो आई थिंक क्लाउड यहाँ पे जरूर बैकस्टैप कर सकते हैं। 3 खिलाड़ियों की एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है एंड हियर वी गो। रोचेस को यहाँ पे ऑफ से डाउन किया जाएगा व्हिच मींस जिपर इज लेफ्ट ऑल बाय हिमसेल्फ 1 वर्सेस 4। यूटिलिटी में उनके पास चलिए एक इंसेंडरी जरूर है, फायर बॉक्स को क्लियर किया जा सकता है बट उसके पहले स्पॉन गॉड उनको डाउन करेंगे। 3 op kills for this spawn god and he gets Team India the 5th round. This is gonna be incredible because slowly, steadily, Team India is walking all the way up towards their victory lines. Make sure करना चाहते हैं कि at least first half, no matter what happens, they at least keep themselves in a big lead. But looking after Team Sri Lanka, 8 राउंड में से गाइस ये एक तीसरा या चौथा राउंड है कि आपको टीम श्रीलंका एक बार फिर ये पिस्टल्स के साथ खेलते हुए देखने को मिल रही है। ऑल ईगल्स, क्लाउडा फाइंड्स द फर्स्ट वन, फाइंड्स अनदर वन थ्रू द कनेक्टर्स, लुकिंग टू पिक ऑफ द प्ले ऑन शॉट। अपने टीममेट को भी बहुत ज्यादा अटैक किया बट वो तीसरा किल जरूर यहाँ पे अपने नाम किया। 3K फॉर द साइड ऑफ क्लाउड एंड नाउ वी आर लेफ्ट टू ओनली 2 प्लेयर्स। एसके वाओ यहाँ पे हाइपर को जरूर डाउन करेंगे बट इसी के साथ निकेश इज गोना डील विद द फाइनल प्लेयर। टीम इंडिया अप विद 6 राउंड। 8 राउंड में कहानी ये रही है कि इंडिया ने जरूर पिस्टल राउंड अपना हासिल किया बट उसके बाद टीम श्रीलंका इंस्टेंटली वो डीगल राउंड्स पे कैपिटलाइज करते हुए देखने को मिली एंड आई मीन दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। क्लाउडा इज जस्ट गोइंग मॉन्स्टरस एट दिस पॉइंट। ही इज जस्ट थर्स्टी फॉर दीस किल्स एंड ही इज जस्ट गेटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मीनवाइल आप देख सकते हैं जिपा एक हेडशॉट बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हुआ था जहाँ पे असिस्ट यहाँ पे क्लाउडा को जरूर मिला होगा बट चलिए अब बढ़ते राउंड नंबर 9 की तरफ। एक मिड एग्जीक्यूशन एज पिस्टल्स आर स्टिल ऑन। I don't get this. Though back-to-back pistols team Sri Lanka, how do they manage to play? Either they go on with one complete save. चलिए एक ऑफ जरूर यहाँ पे बेंजी ने retrieve किया from the side of SK Wow, but that's going to be positioned all the way towards the A main. And now if you want to go on for a 1 versus 4 retake, the bomb is going to be planted all the way towards B. तो अगर यहाँ पे अपने द्वारा एक रीटेक की संभावनाएं बनानी है तो थोड़ी जल्दी अपने रोटेशंस को पूरा करना होगा। एंड टीम इंडिया दे ऑल ओवर द मैप। वो लोग यहाँ पे आपको टी स्पॉन पे भी देखने को मिल रहे हैं, सीटी पे भी, एमिन पे भी यहाँ पे पुश एंड बी पे भी ऑलरेडी प्लांट हो चुका है। बट इन सारी चीजों के बीच में निकेश इज गोना टेक डाउन द ऑपर, माइट इवन रिट्रीव वन फॉर द साइड ऑफ एसके वाओ एंड वाओ द टाइमिंग लुक्स प्रॉमिसिंग। दैट वाज इंडीड इनक्रेडिबल। Nikesh with the nade and with another, damage onto his AK looks just good and spawns at the right spot where he got the end last kill. 2-7 score line. I think टीम इंडिया अगर एक और एक राउंड जीत जाती है यहाँ पे तो उनके लिए एक चीज कंफर्म होगी, वो रहेगी कि फर्स्ट हाफ पे नो मैटर हाउ वर्स्ट केस सिनेरियो दे गो थ्रू, दे विल एटलीस्ट कंफर्म देमसेल्फ द लीड। बट द डबल ऑप सेटअप इज नाउ आउट फ्रॉम द साइड ऑफ टीम श्रीलंका एज 3 M4 2 AWPs बीन पोजीशन टुवर्ड्स A and B. नो वन टू वॉच टुवर्ड्स मिड। यहाँ पे स्नाइपर नेस्ट पे कोई भी खिलाड़ी नहीं है एंड टीम इंडिया ए एग्जीक्यूशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सिटी स्मोक ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे सैंडविच को भी क्लियर किया जाएगा बट यहाँ पे डिफॉल्ट पे ट्रिपल बॉक्स पे जो खिलाड़ी है वो यहाँ पे मुश्किलें जरूर बना रहे हैं। हाइपर बेंजी और हाइपर गेट्स 2 each. दिस इज व्हाट टीम श्रीलंका नीडेड एंड देखते ही देखते टीम इंडिया इज डाउन टू ओनली 2 players. दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ ये दो खिलाड़ी यहाँ पे जरूर कुछ कमाल दिखा सकते हैं बट एसके वाओ को डाउन किया गया। दैट्स द ऑफ बीइंग टेकन केयर ऑफ। टीम श्रीलंका लुकिंग टू गेट देयर थर्ड point on the scorecard. This was a much needed victory. Just look at the economy. ये राउंड अगर नहीं जीते तो शायद मुश्किल बन जाती है। शायद से इस वजह से टीम श्रीलंका ने मेक श्योर किया कि वो एक नहीं 2 बैक टू बैक सेव रखे ताकि एटलीस्ट वो डबल ऑप सेटअप अपना बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे। 10 राउंड के बाद टीम श्रीलंका गेटिंग टू विन 3 राउंड while India managing to get 7 for themselves. And just look after this shot, clean shot coming in from the side of Cove. 3-7 स्कोरलाइन इंडीड एंड अब सिर्फ ये 5 राउंड डिसाइड करेगी कि क्या टीम श्रीलंका अभी भी उनके पास एक फाइटिंग चांस रहेगा सेकंड हाफ में। दिस इज गोना बी अनदर वन ऑफ दोस बाय राउंड्स। अब तक हमने फर्स्ट एंड थर्ड राउंड के बाद अब तक टीम इंडिया को एक भी बार ओनली पिस्टल्स पे नहीं देखा है। लाइक देयर इकोनॉमी हैज जस्ट बीन एज गुड एज एवर एंड दिस इज व्हाट यू रियली नीड। आपकी कम परसेंटेज ऑफ द राउंड हो जहाँ पे आप अपने द्वारा पिस्टल्स पे डिपेंड कर रहे हो, यू कंप्लीटली मेंटेन दोस इकोनॉमी बट रोचेस विद अ बिग बूस्ट टुवर्ड्स शॉट फाइंड्स निकेश जो यहाँ पे अंडरपास से पुश कर रहे थे। कुफ इज गोना फाइंड एसके वाओ through the palace. It's going to be only down to 3 players and all 3 of them are making their way in towards TV room. अब टीम इंडिया जरूर चाहेगी कि या तो वो टीवी रूम से होते हुए बी साइड पे जाए या फिर एम इन कंट्रोल ले बट यहाँ पे बेंजी he's just playing the long game here. उन्होंने पूरा पैलेस कंट्रोल ले लिया है। बेंजी might really get 2 of these players at this moment and yes he does. already पहला किल यहाँ पे मिल चुका है। 2 ही खिलाड़ी बचे टीम इंडिया से एंड अब यहाँ पे मुश्किल बढ़ जाती है टीम इंडिया के लिए बिकॉज़ नंबर्स गेम में वो सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ जीवित है। स्पॉन गॉड चलिए गुड फॉर 1, अनदर प्लेयर हाइडिंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ सीटी
अगर यहाँ पे बॉम्ब प्लांट भी करते तो पीछे से यहाँ पे क्लाउडा को बैकअप देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूटिलिटी इज आउट राइट नाउ फॉर टीम इंडिया. दे हैव नो यूटिलिटी टू वर्क विद. एंड रीटेक पे देखिए टीम श्रीलंका ऑलरेडी दे हैव 3 smokes, 3 flashes and also a nade to make things worse. And if that's not enough, तेमिन पे ऑलरेडी ऑपर तैनात है. हाइपर यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकते हैं वो टीम इंडिया के लिए. देखिए हाइपर ऑलरेडी पहला किल निकाल चुके हैं, क्योंकि वो फ्लैश बहुत ऑन पॉइंट था, उनको असिस्ट भी मिलेगा कुश के उस फ्रैग के लिए. टीम श्रीलंका, this game is long gone anyway far or near to over, because slowly steadily यहाँ पे सारे players make sure कर रहे हैं कि जितना हो सके अपने द्वारा वो सीटी एडवांटेज को बिल्कुल भी ना गवाए. आपके पास जरूर एक डिफेंडिंग एडवांटेज है. द प्लेयर हैव टू वॉक अप थ्रू योर क्रॉसेस एंड टीम इंडिया स्टिल नीड्स दैट वन, like I'll say, like a retaliation for that double op setup. ये जो डबल ऑप सेटअप रहा है सो फार टीम श्रीलंका से has been really promising, and this is what I really talk about when it comes down to the map of Mirage. आप अगर सेकेंड हाफ पे सीटी साइड पे हो, सो आई थिंक दैट्स अ रियली बिग एडवांटेज. देन इट कम्स डाउन कि आप किस तरीके से अपने राउंड विंस को अपने द्वारा सिक्योर कर रहे हैं. स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ लीड जो थी वो अब मिनिमाइज होकर एटलीस्ट 1 या 2 राउंड की रह सकती है दोनों ही रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए. बट टीम इंडिया मेकिंग अ क्विक एग्जीक्यूशन टुवर्ड्स द साइड, देयर इज नो स्मोक कमिटमेंट्स. मोलोटॉव से जरूर यहाँ पे वॉक बैक किया जा रहा है, बट व्हाट, हाइपर मिसेस अ शॉट एंड यू डू नॉट मिस दोस, बिकॉज़ इफ यू डू इट्स गोना बी पनिश्ड अ बैड. Benji, even after being flashed off, gets 2 kills for himself. Kushif and Zipa are going to be all down to him, but थोड़ा ज्यादा aggressive हो रहे क्लाउडा. HP जरूर बहुत ज्यादा गवा बैठे वो इस 1v1 duel पे, but Zipa will really take down Clouda. It's a 2 versus 2 retake scenario, but with Kuch having only that AWP, not the ideal scenario for him. He has a piece of utility. मोलोटॉव एंड इंसेनमेरी से जरूर वॉक ऑफ किया जा सकता है, बट फायर अप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डैमेज ले चुके हैं. कुछ ऑफ उनको यूएसपी 9 से डाउन कर देंगे. ओ माय गॉड, दिस इज गोना बी सो डिफिकल्ट. ही इज रियली स्टिकिंग टुवर्ड्स अ डिफ्यूजल किट. उनके पास डिफ्यूजल किट भी है यहाँ पे, एंड कुछ ऑफ जस्ट टेक्स आउट द बेटर ऑफ एसके. वाओ, एंड टीम श्रीलंका विंस द 5th वन. ही हैज इनफ टाइम टू मेक श्योर कि वो डिफ्यूजल किट के रहते डिफ्यूजल भी अपना पूरा करे. एंड टीम इंडिया, not the best case round for them, completely getting outplayed. इंसेनरी जरूर बहुत लाजवाब था, बट यूटिलिटी डिफ्यूजल किट से कमिट करना चाह रहे हो, बिकॉज इमेजिन द फैक्ट कि यहाँ पे आपके पास स्मोक, यू आर गोइंग इन 5 सेकंड में ऑलमोस्ट यू कैन गेट द डिफ्यूजल, एंड द प्लेयर्स इज गोना बी टू फार अवे फ्रॉम यू. ही हैज टू हैव डबल थॉट्स, इजंट इट, कि या तो ये शायद एक पूरा फेक हो सकता है, और दिस कुड बी लाइक प्रोज नॉट फेक मूवमेंट फॉर हिम. बट नॉनदलेस टीम इंडिया नाउ गोइंग ऑन फॉर अ रश बी कॉल, एंड ये रश बी तो फिलहाल 1v1 ट्रेड पे अच्छा रहा है, बट क्लाउडा फाइंड्स 2. यहाँ पे आप मुश्किलें बन सकती है, बट क्लाउडा इज अनस्टॉपेबल. 3 back-to-back प्लेयर्स को डाउन करेंगे. एंड टीम श्रीलंका, दे आर जस्ट सो क्विक विद देयर रोटेशन. रोटेशंस हैज ऑलरेडी बीन कॉल्ड ऑफ. 2 खिलाड़ी यहाँ पे आपको मार्केट के विंडो से बाहर आते हुए देखने को मिल जाएंगे. स्पॉन गॉड टेक्स डाउन बेंजे विद अ टेक 9. इट्स ऑल कम डाउन टू हाइपर with the AWP. 1 versus 2 for him, but SK wow deals him apart. And Nikesh, जो कि ऑलरेडी मिड से लर्क कर रहे थे मार्केट से आते हुए, उन्होंने तो देखिए अपने द्वारा ऑलरेडी वो राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोज आउट कर लिया था. 2 और राउंड रिमेनिंग है, एंड इन 2 राउंड्स पे देखना इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से टीम इंडिया अपने द्वारा वो जीत को हासिल कर पाती है, क्योंकि इवेंचुअली 5-8 की स्कोर लाइन पे things are not going to be the brightest out of all for Team Sri Lanka, especially given the fact that it might come down to a 9-6 scoreline. And अगर 9-6 या 10-5 पे जाती है ये scoreline, तो अब देखिए कितनी मुश्किल वाली बात बन सकती है. अब 13 राउंड्स में this is the 6th time we are seeing Team Sri Lanka on an eco, but does it stop them from feeling the pressure? No, it does not, क्योंकि ऑलरेडी पहला किल यहाँ पे रोशेस निकाल चुके हैं. स्पॉन गॉड को डाउन किया गया, and he's going to be completely out of the equation. We still have 4 more players from Team India. 1 player towards the close under sniper nest position. Kushev is playing so aggressive. He's willing to take these high risk peaks just to make sure कि high risk high reward पे एक complete off angle से beat कर पाए वो Team India को. But Hyper, you are stuck. You're dead. Hyper, you need to get out. Oh my God! There's the moment that Molotov went right into his sniper nest. That was the moment that it was all over. Either he had a smoke, or either he goes out and do a suicidal kill. कि वो मरे, but at least a kill लेके, just the way Kachev did here, he knew he was gonna go down, but at least he found some damage, and this leaves it so retakeable. पिस्टल्स है हाथों में टीम श्रीलंका के, बट एचपी देखिए टीम इंडिया के दोनों खिलाड़ियों की एचपी आपको 36 and 14 एचपी पे ही देखने को मिल जाती है.
So this is going to be a real difficult task. Let's see how they manage to bring back the entire round. The close plant hasn't yet came in, but Nikes at least finds one for himself. Ruches is down to 1 versus 2, finds one already, but is flashed off. Nikes has to save it. Already has found two for himself. But Roches यहाँ पे टिकट की पोजीशन पे आराम से इंतजार कर रहे हैं. Nikes, he now finds spots on the side of Roches, and Roches is really playing the time game here. The bomb has to go down. Nikes comes in with a quick peek, and that's the 9th round. Team India gets saved in the nose of Nikes. And श्रीलंका ये पिस्टल राउंड्स भी उनके लिए कितना ज्यादा उनको लाजवाब यूएसपी 9 से डाउन कर we देंगे. cannot उनको just यूएसपी say, 9 से and this is just incredible from the side of Team India as once again they get the 9th round. Now they really need to make sure कि ये सारे के सारे equations पे किस तरीके से अपने द्वारा make sure कर सकते हैं कि इस गेम को क्लोज आउट करें. आखिरी राउंड है इस फर्स्ट हाफ का, and at least for the silver lining, Team Sri Lanka need that 6-9 scoreline with a pistol win to keep their hopes alive. This is going to be a BO1, and Kuchev op deals the first blood. पहला ब्लड ऑलरेडी टीम इंडिया के अगेंस्ट पे आते हुए देखने को मिल रहा है. But that's always been the case, if you ask me. Like, even if it's like, the Deagle rounds, I think they have really done good. But Benji with the stairs, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आएगा. एक फरारी पीक देते हुए आपको देखने को मिलते हैं in a case. And he somewhere down the line manages to beat the Oppo. But that's not the only one. Eskewa will still be taken care of. दो खिलाड़ी अभी बचे हैं टीम इंडिया से, and this is the last round indeed. Spawn got gets taken down. Nikes from the mid lurks in a 1 versus 5. ये 1v5 इतना ज़्यादा easy तो उनके लिए हो नहीं पाएगा, especially after being spotted and not getting the benefit of kill. But nonetheless, Benji takes him down. That's a 6-9 scoreline. Team India, they have a lead of 3 rounds, but क्या वो पिस्टल राउंड जीत पाएंगे? Because अगर पिस्टल राउंड जीत पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास डबल डिजिट्स तो आ जाएंगे स्कोर कार्ड पे. साथ ही साथ उनको यहाँ पे मौका मिलेगा कि अपने सिटी साइड के इस कॉम्प्लिकेटेड बाय को, इस कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरीके से वो मेंटेन रख सकते हैं. लूजिंग द पिस्टल राउंड means clean 2 rounds being given away if you have some magic with those deagle. But execution देखना मैं बहुत ज्यादा पसंद करूंगा. अब टीम श्रीलंका से, श्रीलंका का सिटी साइड बहुत लाजवाब रहा. सारे के सारे खिलाड़ी दे आर रियली परफॉर्मिंग रियली ग्रेट एज अ टीम. बट नाउ अ स्प्लिट पोजीशन, कोई भी साइड पे कमिट नहीं किया जा रहा है. अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 फ्लैशेस एंड एक स्मोक, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच टीम श्रीलंका हैज वेंट इन. निकेश के पास जरूर आपको देखने को मिल जाता है एक डिफ्यूजल किट, बट इज दैट गोना बी समथिंग टू रियली कंसीडर फॉर? दे आर मेकिंग इट कि वो लोग ए पे फेक कर रहे हैं. 2 प्लेयर्स ए मेन से जरूर बाहर आए. एक को पिक ऑफ किया गया, दूसरे को जरूर यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि पिक ऑफ करे. एंड ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो चुकी है. निकेश यहाँ पे रोटेशन पे आ रहे, बट निकेश ओनली फॉर हिज व्यू, ही डज नॉट रियलाइजेस कि यहाँ पे 2 खिलाड़ी ऑलरेडी है. बट चलिए, निकेश ने अपने द्वारा 2 किल निकाला, but the side has been given away. Well played from the side of Nikes, even though realizing कि यहाँ पे A side पे hit होते हुए हमें देखने को मिल रहा है. टीम श्रीलंका, what a clean execution for them, but the round is nowhere even close to over. अभी भी make sure करने कि इस post plan scenario को defend कर पाए सिटी को डिफ्यूज करने से. पहला किल आ चुका है, but that's going to be instantly traded. Zipper finds himself in a 1 versus 3. Good for 1 kill. Clouder की HP बहुत ज्यादा कम है. Good for another one, but Clouder जिनकी HP ही सिर्फ 8 थी, उनको यहाँ पे नाकाम रहे डाउन करने में. And टीम इंडिया अपना 10वां अंक पाएगी. वो डिफ्यूजल किड जरूर बहुत ज्यादा काम आएगा, एंड काम आएगा वो क्लच भी, जो कि ऑलमोस्ट हो सकता था टीम श्रीलंका के नाम. 1 वर्सेस 3 में 2 खिलाड़ियों को जरूर डाउन किया, बट यूएसपी प्लेज, oh my god, this is going to be so, that is just incredible. I believe slowly steadily getting themselves to the victory. अब टीम इंडिया सिर्फ 5 और राउंड दूर है अपने अगले मैच पॉइंट से. 4 मैचेस में से इन सारे रीजन्स को एटलीस्ट 3 जीतने हैं टू कंफर्म देयर क्वालिफिकेशंस. ऑलरेडी पहला जीत चुकी है टीम इंडिया, अगर दूसरा जीते तो उनके नेट पॉइंट्स पे जरूर बात आ जाएगी. क्लाउडा गेटिंग बूस्टेड हियर टुवर्ड्स द लैडर रूम, एंड 4 खिलाड़ी ऑलरेडी मिड पे अपने द्वारा थोड़ा अग्रेसिव होते हुए आपको देखने को मिल रही है. टीम श्रीलंका, दे वेंट इन फॉर अ फोर्स बैंड. डू वी लव दिस? Because why not? I mean, आप देखिए 4 राउंड में मुश्किल आपके लिए बन सकती है, but escape, wow, oh my god, not like that. He gets blinded yet gets a kill. Zipper with a Galil finds one, but only to be traded. It's all come down to Benji, down to a 1 versus 4, and अब इस खिलाड़ी को कुछ कमाल करके दिखाना होगा. स्टेज पे एक खिलाड़ी पैलेस के लॉग्स पे है. चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास था उनके द्वारा, बट टीम इंडिया ने पनिश किया श्रीलंका को, क्योंकि आपने अपने द्वारा पिस्टल राउंड में हार दर्ज की. You know what's going to be at stake, but they played with fire, and that's not how it goes. Eventually, mid control was looking really good, but आपने बिल्कुल भी सपने द्वारा वो यूटिल पे इन्वेस्ट नहीं किया. And मिराज के मैप पे I think यूटिल plays a big role.
बिकॉज आपको अगर मिड कंट्रोल लेना है तो पहले आपकी क्रॉसिंग स्मोक यहाँ पे पूरी तरीके से स्नाइपर नेस्ट को डिनाई करनी चाहिए. मे बी स्नाइपर नेस्ट शुड बी मॉलिड ऑफ एंड देन द कनेक्टर टू एग्जीक्यूट टुवर्ड्स द बी साइड. कनेक्टर स्मोक तो यहाँ पे आ चुका है बट 4 वर्सेस 4 पे हाइपर गेट्स टेकन डाउन. Oh my god, Cloud is just fighting each and every player down the mid. It's not a competitive mod anymore as Team India is just realizing that Sri Lanka doesn't have the best buy possible to just go on, get aggressive, do not give the map control. Because हमने देखा है कि श्रीलंका कितनी डेडली साबित हो सकती है इन सारे डीगल से. एंड यही डीगल्स के रहते हमने देखा है कि ये देखिए रोचेस वंस अगेन takes down fired up, जिनके पास एक राइफल है, जिनके पास एक हेवी हेलमेट है, and he has so many like utility to work with, yet only falls down to the deagle headshot. अभी भी ये राउंड एक उम्मीद है टीम श्रीलंका के लिए, बिकॉज बॉम्ब ड्रॉप नहीं हुआ है अंडर द सीटी कंट्रोल. टीम इंडिया in a 1-1-1 split, one towards connector, another towards short, and the third player, which is going to be Spawn God, is all the way towards ticket position. Benji walking down from the underpass. क्लाउडा के सामने जरूर यहाँ पे स्लोली स्टेडली वॉकअप कर रहे मिड कंट्रोल, तो चलिए मिल जाएगा. बट 40 सेकेंड्स में आपको फिगर आउट करना होगा कि किस तरफ आप हिट करना चाह रहे हो. बिकॉज अगर यहाँ पे एंड सेकंड में पुश करते तो मुझे लगता है राइफल्स के अगेंस्ट पे दोनों खिलाड़ी एक ही स्प्रे में डाउन हो सकते हैं, विच इज गोना बी नीड सम ऑफ द केसेस. एंड सी दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. अगर आप एक साथ यहाँ पे कोई भी जगह धीरे धीरे जा रहे हो तो एक ही स्प्रे में दोनों खिलाड़ियों को एक साथ एक ही खिलाड़ी से डाउन होने की बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है. एंड टीम इंडिया दैट्स व्हाट दे हैव डन. 6-12 स्कोर लाइन सो फार. तो मुझे लगता श्रीलंका के पास जितने राउंड्स है उससे ऑलमोस्ट डबल राउंड्स यहाँ पे टीम इंडिया ऑलरेडी पा चुकी है. बट द ओनली थिंग विद टीम श्रीलंका कैन रियली बीट टीम इंडिया इज इन दैट इकोनॉमिकल बैटल. सिटी साइड को यहाँ पे डिफ्यूजल किट खरीदना है, उनको सारे एक्सपेंसिव वेपन्स एंड एक बहुत एक्स्ट्रा पीस ऑफ किट बाय करनी है. 2 बैक टू बैक विक्ट्री भी अगर यहाँ पे टीम श्रीलंका को मिली तो फिर यहाँ पे इको पे डील करना होगा टीम इंडिया को. एंड फिर हार मतलब बैक टू बैक 2 विंस फॉर टीम टी साइड, विच इज इन दिस केस द साइड ऑफ श्रीलंका. बिकॉज टीम इंडिया ने भी यही फायदा बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया. Each and every round they made Team Sri Lanka fall back. They were fall back on an Desert Eagle buy. चलिए रोचेस पैरा के लिए यहाँ पे मिल चुके हैं. This is what Team Sri Lanka really needed. SK Wow indeed is going to be denied, but there's still 2 players position. Rotation has been called off, but rotation को cut off करने के लिए बेंजे भी already mid पे तैनात है. Spawn God यहाँ पे जरूर इंतजार करे, but Hyper is just going in a beast mode right now. कनेक्टर क्लियर कर दिया, जंगल क्लियर कर दिया, देखते देखते पूरी साइड ओपन अप कर दी उन्होंने पोस्ट प्लान में लाने के लिए. जब तक यहाँ पे निकेश अपना मन बनाते सेफ के लिए उनको डाउन किया जाएगा. 7वां राउंड टीम श्रीलंका अपने नाम करते हुए. इंडिया सिर्फ 3 राउंड दूर है ऐसे तो मैच पॉइंट से. प्लेस पोजीशन इकोनॉमिकल ट्रैप में फंस जाते हैं तो मुश्किल उनके लिए बन सकते हैं. देखिए उनकी इकोनॉमी फायर्ड अप सिव और सिव उनके पास $3,000 है. अब इतने कम अपने इकोनॉमी से आई डोंट थिंक कि वो अपने द्वारा एक राइफल या फिर एक आर्मर भी यहाँ पे अफोर्ड कर पाएंगे साथ में. सो दे कॉल ऑफ फॉर एन इको. एंड सी दिस इज व्हाट आई टोल्ड. अगर श्रीलंका एक भी राउंड जीतती है इंडिया को फोर्स अप करना होगा अपने इकोनॉमी को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि दैट इज व्हाट रियली डिसाइड्स कि वो अगले राउंड में क्या बाय कर पाएगी कि नहीं. ये राउंड हारेगी, अगले राउंड में एनीवेज बाय मिलेगा, बट अगर अगला राउंड हारी तो उसके बाद देयर इज गोना बी अ ट्रेट ऑफ मोर लॉसेस. एंड दैट्स वेयर टीम श्रीलंका हैज द चांस कि वो ना सिर्फ इस पूरे के पूरे राउंड को 12-8 पे तब्दील करे, बट अगला राउंड जीत के ना सिर्फ 12-9 बट 12-10 भी यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं. बट दैट वुड ओनली मीन कि टीम इंडिया विल देन प्लान आउट टू ब्रिंग अ डबल ऑप सेटअप. क्लाउडा एंड स्पॉन गॉड के पास 2700 है, which really means that this could give them such a big advantage. 2 लॉस भी नहीं हुआ अब तक. आई थिंक ये पहला लॉस था टीम इंडिया का. लॉस बोनस उनका 1900 रहेगा, मतलब यहाँ पे स्पॉन गॉड एंड क्लाउडा को ऑलमोस्ट 4600 रुपए मिलेंगे. तो सिर्फ ओनली प्लेयर हु कुड बाय एन ऑप इज इंडीड गोना बी स्पॉन गॉड विद नो मोर यूटिलिटी. बट चलिए हाइपर को यहाँ पे फिलहाल निकेश का किल मिल चुका है एंड ही इज जस्ट गोइंग इन ब्रूटल. ही इज जस्ट गोइंग इन टेकिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. क्लाउडा यहाँ पे एक और किल निकालेंगे बट उसके पहले उनको ट्रेड किया जाएगा. एसके वो फाइंड्स बेंचे. इट्स डाउन टू अ 3 versus 3 while one एसके वो फाइंड्स another headshot. Kuche finds himself alone in a 1 versus 2. It's good for the first kill. 1v2 for him. Let's see if he could really find the 2 kills to save himself for getting eco'd. Oh, that headshot was brutal but fired up. He's not anticipated to come from the short position. Kuchev might not really realize कि वो short position से आ रहे हैं. Fired up has the benefit of doubt at this position कि यहाँ पे किस तरफ पे player position है. But Kuchev with a 1 versus 3 clutch saves his team from sinking down. He saves his Titanic from sinking, and that's going to be the 8-12 scoreline as now Team India has a chance to bring out these by जितना उन्होंने पिछले राउंड में किल किया
से आ रहे हैं, यहाँ पे मौका मिलेगा कि अपने द्वारा जितना हो सके वो बाय को पूरी तरीके से निकाल पाए, बट कुचेफ, आई मीन दिस प्लेयर हैड टू गेट दैट 1v3 क्लच। अगर वो नहीं करते देन इट वाज ऑल ओवर, देन इंडिया को ना सिर्फ 13वां राउंड मिलता, बट टीम श्रीलंका के लिए वो लॉस ये बहुत ज्यादा उनके लिए वो मार्जिनल एरर्स को मिनिमाइज कर देता है। इसके अबाउट टुवर्ड्स कनेक्टर एंड उनका साथ निभाएंगे यहाँ पे स्पॉन गॉड with an M4A1S towards the mid position. Wait a minute. Okay, there's a scout for fired up as well. So like that seems to be a clean 3-1-1 split. 3 खिलाड़ी ए की तरफ, एक शॉट पे है एंड एक आपको बी के डिफॉल्ट साइड पे देखने को मिल जाते हैं। स्लोली स्टेडली रोचेस यहाँ पे वॉकआउट करते हुए देखने को शायद हमें मिल जाए। यूटिलिटी अभी भी बिल्कुल ओवरलोड नहीं किया है, बट टीम इंडिया की यूटिल ड्रेन्ड हो चुकी है। उनके पास सिर्फ 2 फ्लैशेस और सिर्फ एक स्मोक है। मतलब टीम इंडिया के लिए यहाँ पे रीटेक परिस्थिति बहुत महंगी पड़ सकती है अगर उन्होंने गलती से भी श्रीलंका को कोई भी साइड कंट्रोल दिया। दे नीड टू विन दीज 1v1 फाइट्स एंड यूटिल की बात करें 5 मोलोटॉव है टीम श्रीलंका के पास। आई मीन दे आर जस्ट फुल्ली लोडेड विद दीज यूटिल। इतने यूटिल के साथ वो यहाँ पे दिक्कतों में डाल सकते हैं टीम इंडिया को, दैट दे नीड टू बी लकी इनफ टू गेट दीज टाइमिंग्स। एंड देखिए ऑलरेडी नेट फ्लैशेस सबका इस्तेमाल कर चुके हैं, बट देयर कम्स अ किल फ्रॉम द साइड ऑफ स्पॉन गॉड, फायर्ड अप, गेट्स अनदर वन विद हिज एसजी। चलिए जिपा एंड बेंजी एसके वाव को डाउन करने में जरूर यहाँ पे सक्षम हुए, बट 3 वर्सेस 3 रीटेक में अभी भी जैसे कि मैं कह रहा था कि आपके लिए रीटेक इतना आसान होगा नहीं, वो डुअल से ही जीतना होगा। कुछ हैव लेफ्ट हिमसेल्फ अलोन वंस अगेन इन अ 1v3। पहला किल ऑलरेडी मिल चुका है, पर दूसरे खिलाड़ी तो पीछे मार्केट के ही पोजीशन से आ रहे हैं एंड जंगल से थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए। आई थिंक फायरबॉक्स पे प्लांट इज गोइंग डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ कुचेव विद एन एके इन हिज हैंड। लेट्स सी क्या अपने द्वारा कुछ मैजिक कर पाते हैं कि नहीं। बॉम्ब हैज गॉन डाउन। निकेश को यहाँ पे जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एसजी से जीतना ये इतना आसान हो नहीं पाएगा। फायर अप प्लेयर निकेश इंडीड डज द जॉब। 13th round in for the side of Team India and that's going to be indeed the diffusal coming in. टीम श्रीलंका जरूर एक राउंड में हार उनको मिली, इस हार के रहते 1400 प्लस, मतलब बेस्ट बाय अगेन। बट चलिए एटलीस्ट आपने अपने द्वारा एक चीज मेक श्योर की कि आपके पास एक बाय राउंड है। आपने एक चीज मेक श्योर की कि इसी बाय राउंड के साथ यू इंडीड हैव अ वेरी हेल्दी लाइक पोस्ट प्लांट सिनेरियो। तो क्या होता है कि जब आपने पोस्ट प्लांट सिनेरियो पे अपनी टीम को पहुंचा लिया तो सारे खिलाड़ियों को 300 एक्स्ट्रा डॉलर का एडवांटेज जरूर आपके लिए एक बहुत बड़ी योगदान बन सकती है। गलील एंड एकेज स्टिल up again, especially when you have these heavy armor, and Sri Lanka इतना भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट नहीं है उनके लिए बाय, because the buy still looks good for them, but nonetheless 30 seconds already drained down from the timer. Team India this time totally loaded up. पहला इंसेनरी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। रोचेस स्मोक पुश कर सकते थे बट करना उन्होंने सही नहीं समझा क्योंकि वो पूरी तरीके से विजन एडवांटेज दे देता टीम इंडिया को। But there comes a counter smoke. The team India is really betting on their guts at this moment. यहाँ पे मूवमेंट जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए क्लाउडा टोटली पनिशिंग द प्लेयर्स थ्रू द सेकंड विंडो। He gets a kill from the windows and he really puts down Hyper only down to 13 HP. Well, not only good for 13, he gets taken down. Nikesh and SK War finds one respectively. It all comes down to Kochev and slowly, steadily, Team India is just going all in attack. Bodies fall down in the place and position of abs as Team Sri Lanka lose out another round, this time to give India their 14th. अब टीम इंडिया सिर्फ एक और राउंड दो रहे अपने मैप पॉइंट के लिए, अपने मैच पॉइंट के लिए। एंड देन आफ्टर गेटिंग द क्रश डाउन विक्ट्री फ्रॉम द साइड ऑफ बांग्लादेश जिनको 16-8 से डाउन किया, फिर शायद अब नेक्स्ट आपको टीम श्रीलंका देखने को मिल जाए इंडिया द्वारा। But what a day it's been for Team India. Like back-to-back W wins. These wins are something which really most of the audience were kind of relying on. Even we really anticipated कि अगर ये मिराज का मैप है तो आप मिराज के मैप पे टीम इंडिया को सीटी साइड पे शट डाउन कर सकते हो, डबल ऑफ सेटअप। बट व्हाट अबाउट द टी साइड? आई मीन टी साइड पे इट्स जस्ट next to impossible. Look, after SK Wow and fired up, these are the dynamic duos of Indian region. ये दोनों खिलाड़ी अकेले पूरी साइड को यहाँ पे आराम से एंकर कर रहे हैं। अब सिर्फ 2 खिलाड़ी टीम श्रीलंका से बचे। Do we have a dynamic duo for Team Sri Lanka, dude? Because if they have, they had to pop up, but that's not the case. Once again, Clouda and Spawn God deals with the final kill. That's the match point. And अब एक आखिरी पॉइंट दूर है टीम इंडिया। क्या टीम श्रीलंका यहाँ से अब तक का मोस्ट आइकॉनिक कमबैक हमें दिखाते हुए देखने को मिल सकती है? और इंडीड इज इट गोना बी टीम इंडिया विनिंग बैक टू बैक डब्ल्यूज इन देयर मैचअप हिस्ट्री?
because India के wins जरूर किसे नहीं पसंद है. I mean, we would have loved to see them, but the fight which Sri Lanka put up is just incredible. एक बार फिर Eamon से clean rush. There's no flashes, which means कि you're just walking into the crosshairs. Benji really good for the first one, but there comes Spawn God, finds one, moves another crosshair towards Zipper, जो कि Palace से आ रहे थे, but now it's down to 2v2. Somewhere down the line, the number still looks equalized in both the hands, but now Nikesh Flash is beautiful, might really get the timing advantage here, but वो फ्लैश के साथ अपना पोजीशन भी रिवील कर चुके हैं. वो तीसरे खिलाड़ी क्लाउडा इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, सो निकेश जस्ट होल्ड योर एंगल्स. बहुत अच्छी तरीके से स्मोक डाउन यहाँ पे किया गया. आखिरी प्लेयर तो फायर बॉक्स पे, एंड शायद क्लाउडा किल निकाल सकते हैं. क्लाउडा इज ऑन द वेरी राइट स्पॉट, एंड यस ही डज इट. टीम इंडिया गेट्स देमसेल्फ टुवर्ड्स द 16th point, and that is going to be the victory for Team India. Both the matches is going to be won from them, and what a better scoreline than 16-8 in both. बहुत अच्छी तरीके से स्मोक that. टीम इंडिया इज गोना मेक श्योर कि वो अपने द्वारा एक और जीत दूर है इस साउथ एशिया क्वालिफायर्स में अपने नाम ये पूरा का पूरा एडवांटेज लाने के लिए. लेट्स सी कि यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशंस अभी के लिए बनते हुए देखने को मिलती है. बट फॉर नाउ, 2 more players remaining, 11 seconds left on the clock. Bomb plant on. Your thoughts on Team India actually making sure that they are getting those wins for themselves back to back, because eventually देखिए ये एक ऐसा मैच था जहाँ पे हमें ऑलरेडी लग रहा था कि मिराज के मैप पे इट वुड बी रियली गुड इन for the side of Team India, but nonetheless I know it's going to be something where Team Sri Lanka really could work on a lot. That T side was really favorable for them, but nonetheless अब यहाँ पे important रहता है कि किस तरीके से सिनेरियोज बन के आएगी श्रीलंका के लिए, बिकॉज उनके पास अभी भी 2 मैचेस रिमेनिंग है गाइज. वो पाकिस्तान और नेपाल के अगेंस्ट भी उनके अगेंस्ट जो मैचअप है वो अपडेट्स आपको हमारे सोशल मीडिया एट सोशल हैंडल्स एट ESFI पे जरूर देखने को मिल जाएगा. बट कल का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है गाइज, क्योंकि कल आपको फाइनली देखने को मिलती है टीम इंडिया कंपीटिंग अप अगेंस्ट पाकिस्तान. तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही इमेंस CSGO एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है. पहला मैच रहेगा 4 बजे अगेंस्ट नेपाल, एंड देन वी आर गोना हैव अनदर मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. तो कल ट्यून इन करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज टुमारो इज गोना बी इंडीड द डे where all you CSGO fans have to be right there to cheer for Team India, because you really know कि इंडिया यहाँ पे कितनी बड़ी पावर हाउस बन सकती है. एंड द CSGO being so much एक जो बढ़ावा मिल रहा है आई थिंक CSGO को, that is just being so, I mean as a player as well, it's just feel incredible for us as well. And Team India से already हम देख सकते हैं कि Spawn, Cloud up, fired up, SK, Wow and Nikesh just doing wonders, just doing some brilliant performances अपने द्वारा वो जरूर दिखा रहे हैं. And I think Esports Federation of India को भी एक बहुत I think that we do owe them a big thanks, because ये जिस तरीके से पूरी तरीके से उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, partnering the side of Global Esports Federation, then also having the International Esports Federation with us, Asian Esports Federation भी जुड़े, चारों Esports Federation जुड़ के ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है सारे खिलाड़ियों को कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करें, अपने स्किल को एनहांस करें एंड कम्पीट करें इन सारे के सारे क्वालिफायर्स के थ्रू. जो भी ये साउथ एशियन क्वालिफायर्स को जीतेगा एशियन क्वालिफायर्स में compete करने के लिए मूव ऑन टूवर्ड्स द एशियन क्वालिफायर. वहां से जीतने के बाद फिर यहाँ पे 15th वर्ल्ड esports चैंपियनशिप पे जरूर यहाँ पे बढ़ सकते हैं. बट गाइस आई थिंक दैट इज गोना बी इट फ्रॉम अवर साइड. यू गाइस कैन डेफिनेटली एंजॉय द हाइलाइट्स. जैसे कि आप देख सकते हो टीम इंडिया हैड अ बिग एडवांटेज, 7-3 का स्कोर लाइन था, बट दैट्स वे टीम श्रीलंका का डबल ऑप सेटअप बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग साबित हुआ. एंड यही वो डबल ऑप सेटअप है जो कि बहुत ज्यादा उनके लिए एक मैं कहूंगा कि आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग देम टू ब्रिंग इट आउट एट द 5th राउंड, बट वो आते आते 11th राउंड लग गया. एंड देन टीम इंडिया दूरी ऑलरेडी बना चुकी थी टीम इंडिया अपने लिए. नॉनदलेस 9-6 के स्कोर लाइन के बावजूद जो पिस्टल राउंड जीता, that was just amazing. But I think that's going to be it from our side, guys. Thank you so much for tuning in to the stream. Make sure that you do not forget to hit the sub and like button. Follow us on the ESFI social media as well, क्योंकि वहाँ पे कल के schedules update होने वाले हैं. And tomorrow, as I mentioned, it's going to be Team India taking up against Pakistan in the matchup. So that's going to be something to watch out for. We'll see you guys tomorrow. Until then, have a great evening ahead. He knew he was going to go down. Next day you were gone, left your car and moved on. But looking back
candy, eat you every Sunday. I can feel the beat of my heart and beats. Does it taste like candy? Tastes like you on a Sunday. Feels so bittersweet knowing I can live. You taste like candy. Eat you on a Sunday. I can feel the beat of my heart increase. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. For your love, your love. 'Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll suck you, no, 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 to my center of gravity. 'Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll love you like a supernova. Into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy. But ain't no other way, it's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks her play clean. Don't wanna like I wanna, you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Your love. Cause I'm a black girl for your love. It's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll suck you, no, 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 to my center of gravity. 'Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll love you like a supernova. Burn into you like a shooting star. If you give me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black girl for your love. Never be enough. 'Cause I'm a black girl for your love. That is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance
you fly. 'Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, 'cause that's so much fun. Are you loving the feeling that touch me? Are you in it? Don't see what you see, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly. 'Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. Now come alive with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave and live. I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking lonely through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart. You should fucking stay with him. You should fucking stay with him. Darling, if I had bought you flowers, what if you stayed at home the night? Yeah, I've been lonely counting hours while I'm getting blinded by the light. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart. You should fucking stay with him.
promises, but leave me alone. Don't break my heart. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Say all the words out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I bet my life you'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Dancing on the moon. Maybe my compass was wrong, and I'm still on my way closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own,